So welcome back to Mathematics by Romina, and today in this video we are going to start your class 11th basically. That means yes, we are going to start with your class 11th, one of the most important chapter, and that is trigonometry, chapter number 3, introduction for your exercise 1.3. It's going to be very amazing because yes, each and everything will be explained in the class itself. Now first of all I know कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th में ही ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें वी हैव स्टडीड दैट yes trigonometry revolves all around right angle triangles and how it works with different angles, with different sides, your cosa to a trig, and your angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So we have done all that stuff in your class 10. उस वीडियो का लिंक मैं आपको आपके कमेंट में दे दूँगी, so that please go in the comment box, and if you any one of you wants to revise that from the trick wise, you can just go and revise it from there, because उस सबको दोबारा रिकॉल करवाना it's going to be a waste of time. I'm just going to recall you one thing that was your कि we have 6 trigonometric function: sine, cos, tan, and then we have the reciprocal one, which are going to be your cosecant, secant and cot. ओके, तो मेरे पास ये बेसिकली मेरे 6 फंक्शंस थे और इसी के अराउंड हम लोग घूमते थे. बट फॉर एक्सरसाइज 3.1 आई वुड से कि हमें इन 6 की कोई ज़रूरत नहीं है. ओवर हेयर वी जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट योर लेंथ ऑफ द आर्क. आर्क क्या होता है? एक सर्कल का कटा हुआ पार्ट between the angle and the angle between the sides and the radius. That means मैं 3 चीज़ों की बात करूँगी बच्चों इसके अंदर: लेंथ, रेडियस और इसके बीच का एक एंगल, दैट मीन्स थीटा, आर एंड एल. मैं इसकी बात करने वाली हूँ यहाँ पर. और अब ये थीटा है, ये थीटा किस फॉर्म में होगा? द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज योर थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा इज गिवन इन रेडियन. बट मैम हमने तो सिर्फ डिग्री में पढ़ा है. करेक्ट, आई टोटली एग्री कि आप लोगों ने सिर्फ डिग्री में पढ़ा है. इसमें हमें रेडियन में दिया हुआ है. दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री एंड द वाइस वर्सा. Understand how to convert your radian into a degree, because that is going to be the starting of our 3.1 basically. So now kids, if let's suppose we already know one of the relation, that is pi radian is equals to 180 degree. Correct? Now just suppose that I wanted to find your 1 radian. That would be 180 degree upon pi. Simple है. And similarly if I just want to find 1 degree, so that would be pi radian upon 180. You just have to use any of these formula to convert it to the radian or a degree. Now let's move ahead and let's see what is the first question saying to us. It is question number 1. I am going to just solve based on your NCERT right now. The difficult question I am going to bring in the end, that is going to relate your JEE Mains and JEE Advanced also. So that means yes, on this platform you are going to get full 11, 12 JEE Mains, JEE Advanced and CUET, but yes, with time only. So you have to give me some time and the things will get better. Find the radian major corresponding to the following degree major. So the degree major is already given to me, that is 25 degree. I have the relation that is pi radian is equals to 180 degree. So that means I just wanted 25 degrees. So I firstly want the value of 1 degree, which is going to be your pi radian upon 180. What it basically, I just can write 25 into pi radian 180. Now just start solving it and you will end up converting into the radian major. If I just solve them, it's going to be 5 and it's going to be your 36. That is what I think is going to be your answer. Yes, so that means it's going to be 5 pi radian upon 36. That is going to be one of your answers. Now you can just do it yourself. Now you will ask that what is this, ma'am? A dash over there. Always just make a note, and that is that your 1 revolution, basically that means that your 1 revolution is equals to 360 degree
what it represents. It also means to say that 1 degree is equals to 60 minutes. I just read as 60 minutes, and this 1 minute is equals to 60 seconds. So this represents minutes, this represents seconds, and this is your degree. And 1 revolution is equal to 360 degree. So that is what the one thing I wanted to explain. I just forget to introduce you with one more stuff, and that is that how the things are going to be related. मैं अपनी चीज़ों को रियल नंबर्स में कैसे पढ़ पा रही हूँ वो तो हमने देखा ही नहीं. That how if I just say you that real numbers and radians are equivalent. Real numbers and radians are equivalent. What it means, if I just say that my f theta is equals to sine theta, and my f such that radian टू रियल नंबर. व्हाट इट मीन्स बेटा, जो मेरा थीटा है वो कहाँ बिलोंग करता है, वो रेडियन को बिलोंग करता है. जब मेरा थीटा रेडियन को बिलोंग करेगा तो वो कन्वर्ट होगा रियल नंबर के अंदर. दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट माई 45 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई बाय 4. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. बट ये 45 डिग्री मैंने कैसे लिख दिया, एंड आई नो कि जो मेरा साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 45, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी अ वैल्यू एज 1/2. तो मैंने कैसे लिखा ये 1/2, just because I want to write my answer in the real numbers. So yes, I would simply say कि जो मेरे trigonometric functions है वो क्या है, trigonometric functions क्या हो जाएंगे, trigonometric functions मेरे convert होंगे in your real numbers, and that is the concept कि कैसे मैं अपने real number के अंदर अपने sin theta की value लिख सकती हूँ. Otherwise it not be possible. Okay, तो trigonometric functions जो भी होते हैं they are basically my real functions. Okay, now let's get back. Okay, you end up now. So trigonometric functions are my real functions. Now let's understand some more questions over here. If I just take, okay, let's take a second one. It says me minus 47 degree 30 minutes. So first of all, just convert this minute into the degree only. So that would be minus 47 30 upon 60. So it is going to give me the answer as minus 47 1/2 डिग्री. इस पूरे का आंसर क्या आ गया, डिग्री में आ गया. अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है. मुझे सिर्फ इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं उठा के. सो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, इफ़ आई जस्ट सी 47 इंटू 2 दैट इज़ 94, 94 प्लस 1 माइनस 95 अपॉन 2 एंड just convert it into the radian. So pi radian upon 180. That's it. That is what I have to do it over here. Okay, I hope ये सबको क्लियर हो गया होगा. अब देखो बच्चे यहाँ पे कटेगा नहीं, बट हाँ सिंप्लीफाई थोड़ा सा बहुत हो सकता है. लेट्स डू दैट सिंप्लीफिकेशन. बेसिकली 95 को मैंने 5 से डिवाइड किया, आई गॉट इट एज 19 एंड 80 180 हो गया 36. सो आई गॉट माई आंसर एज माइनस 19 पाई अपॉन 36 इंटू 2, and that was your 72 radian, and that was my answer. Now these two parts I'm going to leave as a homework. Just do it yourself and tell me an answer in the comment box. I hope कि इतना बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. Moving towards the next question, it says me question number 2, find the degree measure corresponding to your radian measure. Now this is one of the very important question. इसमें क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी है, कुछ लेंथी भी है. So let's take a lengthy one. 11 upon 6 का 16 का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. This is only the radian measure that is given to me. Now I want to convert this into the degree measure. Since we know कि मेरे पास फॉर्मूला है pi radian is equals to 180 degree. That means if I want the value of 1 radian, so that is 180 upon pi. So बस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. So 11 upon 16 into 180 upon pi. Pi क्या होता है 22/7 as given over here also. तो ये कट गया 2 आ गया, 90 आ जाता है यहाँ से. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो उठाकर. अब तो यहाँ से मेरे पास कितना बन जाएगा बच्चा, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन नाउ. सो अगर मैं देखती हूँ सो 90 क्या 4 टेबल में आएगा, नहीं आएगा. सो लेट्स डिवाइड बाय 2. सो इट वुड बी 45 एंड इट वुड बी योर 8.
So I simply got from here, I simply got my answer as 315/8. अब 315 को हम लोग उठा के 8 से डिवाइड करेंगे. So I will simply get 39 and let's check it out कि मेरे पास प्रॉपर आंसर क्या आएगा. 8 से किया तो पहले 3, that is your 24. So now 31 minus 24 is simply your 75. फिर अपना 9 से किया तो 72 and we got the remainder as 3. So it would be 39 degree 3/8. And now we have to just convert this into your minutes and everything. So that would be your 39 degree 3/8 into 60. अब into 60 से करेंगे as I already explained over here to convert this into your minutes. So that would be 39 degree and 3/8 into 60. So that means 60 को हम लोग 4 से अपना डिवाइड कर देते हैं. सो आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हेयर 15 और यहाँ पे मुझे 2 बचेगा. तो 15 into 3 45 डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो आई विल गेट 22 1/2. सो दिस वुड बी मिनट्स एंड नाउ इट वुड बी 39 degree 22 minutes 1/2 into 60 to convert it into seconds, and that would be your 30 seconds. And I hope that this is going to be the answer. Yes, absolutely correct. This was your answer. Now take -4 as a homework and bring this third part with your dark blue pen so that there is no doubt. And this was your 5π/3. ये काफ़ी सिंपल है सिंस पाई के अंदर आगे जो सिंपल रियल नंबर की तरह दिखता है रेडियन, उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है. इफ़ समथिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ पाई तो पाई और पाई बेसिकली कट जाते हैं, तो काफ़ी सिंपल रहता है. बस कुछ नहीं है, उठा के मल्टीप्लाई कर दो. पाई और पाई तो डायरेक्टली एक बार कैंसिल ही हो जाएगा. ये और ये भी कैंसिल हो गया तो 6 हो जाएगा. तो 6 into 5 is 30 and 300 डिग्री मेजर मेरे पास मेरा आंसर आ गया. सिंपल क्वेश्चन था. इसके अंदर मैंने ये और ये आपको होमवर्क दे दिया है. रेस्ट ऑल आई हैव डन इन द क्लास इटसेल्फ. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. इट सेज मी दैट अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Important information. Through how many radian does it turns in 1 second? हमें 1 सेकेंड का देखना है बच्चों कि वो 1 सेकेंड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा. सो नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट 1 revolution is equals to 360 degree and 360 is actually equals to your 2 pi radian. और यहाँ पे मुझे क्या गिवन है दैट 1 minute is equals to 360 revolutions. सो 1 minute का मतलब क्या हो गया 60 seconds is equals to 360 revolutions. अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ 1 सेकेंड सो दैट वुड बी 6 रेवोल्यूशन. 6 रेवोल्यूशन था और अगर मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ 6 into 1 रेवोल्यूशन में लिख सकती हूँ इस चीज़ को फॉर 1 सेकेंड बिकॉज मुझे 1 सेकेंड का ही निकालना है बेसिकली. तो आई एम जस्ट आफ्टर द 1 सेकेंड एंड 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो 6 into 360 degree that is somehow 6 into 2 pi and that is going to be your 12 pi radian as the answer. बिकॉज वी हैव टू जस्ट फाइंड द आंसर इन रेडियन. अगर डिग्री बोलता तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन करती, बट रेडियन बोला था तो मैंने यहाँ से उठा के इसका कैलकुलेशन परफॉर्म किया है. सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए था. नाउ इट वॉज समथिंग विच आई कॉल्ड अ वेरी सिंपल लॉजिक. अब बच्चा ये जो मेरे पास रेवोल्यूशन है किस चीज़ का है ये देखो. नॉर्मली आपने RPM देखा होगा, दैट इज़ समथिंग विच इज़ विजिबल इन मैनी बाइक्स. ऐसे मीटर होता है एंड ऐसे से बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं एंड यहाँ पे इनटू में 1000 RPM लिखता है. तो बेसिकली जो RPM होता है दैट इज़ कि मेरा इंजन किस चीज़ से घूम रहा है. ओके वो इंजन जब घूमता है तो वो 1000 RPM दिखाता है विद द स्पीड बेसिकली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. It says me that find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius this much by an arc of length this much. दैट मीन्स क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. एंगल को सबटेंड किया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. रेडियस था मेरे पास 100 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द आर्क भी गिवन है 22 सेंटीमीटर. येस वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला और सब कुछ गिवन है, बस थीटा ही तो निकालना है. दैट टू डिग्री मेजर में निकालना है. ये मुझे मेरा रेडियन में दिया होता है. तो दैट मीन्स क्वेश्चन मुझे 2 चीज़ें कह रहा है कि फर्स्टली यूज दिस फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू L/R एंड देन कन्वर्टेड रेडियन इनटू द डिग्री. सो ये मेरे पास L क्या हो जाएगा यहाँ से 22/100. ये आ गया. सिंप्लीफाई चलो कर लेती हूँ. 11 आ जाएगा यहाँ पे, 50 आ जाएगा यहाँ पे. बस डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं. सो थीटा दैट इज़ 11/50. इफ़ आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू pi/50. नाउ वी जस्ट वांटेड टू कन्वर्ट योर डिग्री मेजर इनटू द नाउ वी जस्ट वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री.
degree. So we know pi radian is equals to 180 degree. Now we just want your radian. So 180 अपॉन पाई, so that means कुछ मत करो, 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो. पाई क्या होता है 22/7 होता है, ये लिखा, कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 0 और 0 भी कैंसिल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर एज माई आंसर वुड बी समवेयर टू योर 63/5. आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू माई डिग्री. प्रॉपर डिग्री में सॉल्व करते हैं. सो 12 डिग्री 3/5 इंटू में 60 कर देंगे, तो ये चलो कैंसिल हो गया, ईजी हो गया यहाँ पे क्वेश्चन. 12 डिग्री एंड योर 36 मिनट्स एंड दैट वाज योर आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन थी बट कुछ भी मुश्किल नहीं था. इट वाज इजी. क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्कल ऑफ डिग्री, सॉरी इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर. ओके, सो देयर इज अ सर्कल in which we have a diameter of 40 centimeter, that means radius 20 हो गया, and the length of chord is 20. लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से मैं इसका रेडियस और इसका रेडियस ज्वाइन कर देती हूँ. सो दैट मीन्स ये भी 20 है, ये भी 20 है. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. दैट मीन्स मुझे ये वाला चीज़ निकालने को बोल रहा है, मुझे इस एल को निकालने के लिए बोल रहा है. कैन आई से कि इट्स इक्विवेलेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो सिंस इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट्स गोइंग टू हैव अ डिग्री ऑफ 60 डिग्री. एंड नाउ आई नो कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चा. फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल्स टू L/R, वेयर थीटा इज़ योर थीटा इज़ इन रेडियन, और मेरे पास डिग्री में है. तो 60 को आई नो आई कैन जस्ट राइट 60 एज माई π/3. सिंस यू नो इट्स गोइंग टू बी 180/3 सिंप्लीफाई, तो 60 ही आएगा, दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, तो π/3 यूज़ करूँगी फॉर योर एंगल. एल मेरे को निकालना है, रेडियस 20 गिवन है. क्या मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती? बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. सो 20 π/3 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर एंड दैट इज़ इन सेंटीमीटर. सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर. Okay, now the next question, it says me if in two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree. If there is two circles and in between the angles मेरे पास है 60 डिग्री and एक एंगल है मेरे पास मेरा 75 डिग्री. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. सिंपल बच्चा, देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है थीटा 1 इज इक्वल्स टू L/R1. एंगल अलग हो सकते हैं, आर्क्स सेम ही रहेंगी इन द एंड मेरे पास. एंड यहाँ से अपना एल निकाल लूँगी एज θ1 R1 एंड सिमिलरली ऑफ द सेम लेंथ बोला था इसलिए एल सेम है. मैं आई वाज जस्ट कंफ्यूज विद दैट. θ2 इज इक्वल्स टू L/R2, सो दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू θ2 R2. Can we just compare both this L because it has same length suspended angles, so we can just compare both of them at one time, and it's going to give me basically the ratio of my radius and angles. So θ1 upon θ2 is equals to R2 upon R1, ratio of the two, convert them into my radian. तो 60 डिग्री का तो we just discussed right now, π/3. 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं. नॉर्मली बच्चों को किसी को याद नहीं होगा, सो मैं आप लोगों को कन्वर्ट भी करना सिखा देती हूँ एक बार इसको, ताकि डाउट ही ना आए. डिग्री है, सो कुछ मत करो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो. 75 है और 180 है. इफ़ आई एम जस्ट गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस बाय माई 5 ओनली, सो इट्स गोइंग टू गिव मी 36. और यहाँ पे कितना आएगा 75 डिवाइड बाई 5, इट्स गोइंग टू गिव मी 15. So it will be 15 π/36. So let's write these angles only. So π/3 upon 15 π/36. So pi and pi कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल होगा. यहाँ पे मेरे पास 12 बच जाएगा. So R2 upon R1. दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है? 12 upon 15 इज इक्वल्स टू R2 upon R1. ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ से. यहाँ से मैं अपना और भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बहुत सिंपली, एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू गिव मी द आंसर 4/5. सो आई वुड जस्ट से दैट द रेशियो ऑफ माई, सिंस रेशियो मेरी R1:R2 में आनी चाहिए, सो रेशियो ऑफ माई रेडिया इज़ गोइंग टू बी 5/4 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई आंसर. सिंपल क्वेश्चन, बस याद रखा कि हमें रेडियन मीटर के अंदर सॉल्व करना था, बिकॉज टीचर कैन ईजिली कट योर मार्क्स ओवर हेयर अदरवाइज. सिंपल था. नाउ last question for today's class, it's going to be find the angle in radian through which a pendulum swings if the length is 75 and tip describes an arc of the length. Find the angle in a radian. So we just have to find the angle in a radian
which the pendulum swings. Pendulum यहाँ से यहाँ swing कर रहा है. Length है 75 centimeter. And now it describes an arc of the length. Okay, arc of the length which 10 already given भी है. That means फॉर्मूला यही है, थीटा L/r. एंगल मेरा रेडियन में आएगा और यहाँ पे मेरा जो एंगल है वो ऑब्वियसली रेडियन में ही गिवन भी है. ठीक है ना. तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू आर डन. सो 10/75 बस सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2 upon इसे सिंप्लीफाई करोगी एंड इट्स गोइंग टू गिव मी 70 एंड दैट इज योर गोइंग टू बी योर आंसर in the radian. That's it's for today. There is nothing else that has to be done in the first exercise. So thank you so much kids for viewing my video, for liking my content so much, highly appreciable. And yes, whosoever are joining class 11 from starting, all the best to you people. You're going to rock it. Thank you so much. Bye bye.